Don't know. सवार लूं सवार लूं सवार लूं सवार लूं। हाँ, ये गाना तो सबको पसंद है और मुझे परफ्यूम भी बहुत पसंद है। And you have some red roses that you can see out here, and you must now know that there's a man coming to my show. And as I said, dance like a man. So there are very few people, male dancers, who are there who really keep their personality and they dance like a man, and you love to watch them. So today I have a very special guest with me, Andy Roses also. So okay, he'll call me Didi Andy. This thing. So this is Dhirendra Tiwari. Yay! नमस्ते दीदी। Namaste, Dhirendra. No, bhaiya. So nice to have you here, Dhirendra. It's थैंक यू, great थैंक यू। बीइंग you've एट योर joined. शो इज itself an opportunity, दीदी। Thank you so much. I was telling somebody today that I get calls, that please call me in your show. And I always feel good that people like the show. And I said, you're lucky one. You didn't call me, but I called you. ओह, कैसा लगा But इस शो को? definitely, yeah, but definitely it's your work and your personality and your aura, which, makes me think, yeah, you are somebody special to this world and that I should call you. So, थैंक यू। Dhirendra, yeah, you are quite young and a dynamic dancer, and from the Jaipur Gharana, and then with Aditi Didi also, Aditi Mangaldas Didi also. So, tell me about your family. मतलब आप घर से ही मतलब विरासत में लाए हो, डांस में आए हो, या आपने घर से बगावत करके डांस सेलेक्ट किया? दीदी विरासत तो नहीं थी। I won't say like it was an academic background also, but there are a few people who are very good in academics in my family. My sister, one of my brother is was a teacher, not now. My bhabhi was a teacher, but they have changed the profession. But and my parents wanted me to go into the academic background. लेकिन एक समय ऐसा आया कि dance, I felt like dance is a God gifted calling, and I बगावत तो नहीं कहूँगा, but मैं थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे अब realize होता है कि yes, even at that time I was quite rebellious. Okay. And That time means what was your age like? दीदी When I did you was start 17 dancing? around, yeah, 17, Okay. या 16 Okay. 17 इन बिटवीन। तो मैंने एक डेढ़ साल ही आगरा में डांस सीखा था। मैं आगरा से हूँ बेसिकली। तो Wow. अब मुझे एक डेढ़ साल में ही यू गेट टू रियलाइज दैट नहीं, यू हैव अनदर अनदर होराइजन्स टू चेज। सो और फिर मैंने आगरा में एक डांस देखा मेरी सीनियर स्वाति दीदी का। देन आई सेड, दिस इज दिस अ वुमन हु इज डांसिंग लाइक दिस। देन आई रियलाइज कि मुझे यही डांस सीखना है ऐसा। देन मैं फिर घर वालों को बोला तो उन्होंने तो नहीं कहा। देन आई हैड टू लीव होम, and for 1 year I used to come from Agra to Delhi almost regularly by Okay. train, 4 hours coming and 4 hours going back. So at least 4 to 5 days I was doing the up down from there, and I was doing my graduation also from Agra. तो बड़ा मुश्किल में था वो एक साल तो, लेकिन I think that paid me well. But That how did you find your guru? Like you have हाँ been learning from Rajendra Gangani ji जी and जी जी Bhaiya, जी हाँ and because it is said that a guru is destined, art is destined to you. very true. So, how did you find your guru? There's one thing I want to say. When I was seeing Swati Didi's dance, she was dancing kaida from the footwork with the footwork, Yeah. and Okay. वो कायदा मैंने पहले सुना भी नहीं था कि कायदा तबले पे बजता है, ये कैसे पैर पे कैसे कर रहे हैं। Then I realized this is something I want to. मुझे फुटवर्क से थोड़ा थोड़ा शुरू से ही प्यार था, या उस टाइप का कबड्डी डांस से थोड़ा थोड़ा शुरू से ही प्यार था। मतलब एक बेसिक कैरेक्टर होता है कबड्डी डांस वाला टाइप। तो मैंने कहा ये लेडी तो ऐसा है, ये तो है। तो मैंने उनके ब्रोशर में से गुरुजी का नाम निकाला, थोड़ा पता किया, तो सभी लोगों ने आगरा में कुछ गुरुजी के पुराने स्टूडेंट्स भी आते थे, उनसे भी मैंने पूछा। राशि दीदी नाम है उनका।
तो उन्होंने मुझे एड्रेस भी बताया, मैंने एक पत्र भेजा, पत्र में मेरी एक फ्रेंड ने, जो बाद में मेरी फ्रेंड बनी कथा केंद्रा के, उसने रिप्लाई बैक किया कि गुरुजी से आके मिल लो। देन आई केम टू मीट गुरुजी, देन गुरुजी के पास 2-3 बार आया। ही सेड कि you are supposed to take admission in Katha Kendra, otherwise it would be very tough for you to come here and go, and there's a kind of up down, you cannot do so much, I think, and I realized it, he was right. तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ कथा केंद्र में एडमिशन लिया गुरुजी के पास। और ये How डेस्टाइन वाली long? बात आपने बहुत अच्छी कही, क्योंकि मेरा एडमिशन किसी और गुरु की क्लास में हुआ था, एंड आई कंप्लेन्ड केंद्र दैट आई वांट हिम एज माय गुरु, एंड दे चेंज्ड समहाउ। यस, व्हेन यू सेड ऑफ बीइंग कि बगावत करते हो, तो तुमने बगावत घर पे भी की है आपने, और बगावत आपने कथक केंद्र में भी की है। सो बिल्कुल फॉर द चेंज ऑफ गुरु. But tell बिल्कुल। me, like being a man in the classical field and in the Indian society is a very difficult profession. So, what is your take on it, and how do you think your struggles have, you know? देखिए दीदी, एक चीज शायद काफी समय से मेरे दिमाग में क्लियर थी, मे भी शायद बचपन से, वी आर नथिंग विदाउट सोसाइटी, वी आर जस्ट अ Right, क्राउड, लाइक जैसे बंदर छीना झपटी कर लेते हैं बिना सोसाइटी के, हम right, वैसे ही जिंदगी जिएंगे, वी आर जस्ट अ क्राउड, राइट? right, बट society gives us the kind of civilized way to live. right. Not more than that. Society should not interfere more than that. You have to keep a certain kind of, एक अपना लिबरेशन, अपनी लिबर्टी एक तरीके की होती है। तो सोसाइटी को किस हद तक आपके अंदर, आपको कितना लेकर उसे चलना है और कितना छोड़कर चलना है, ये आपके हाथ में है। तो सोसाइटी का तो काम है दीदी, वो कुछ भी कहेंगे, वो मुझे भी जज करेंगे, आपको भी जज करेंगे, तो जज करना ही उनका काम है। तो इनका जजमेंटल कैरेक्टर पे उसको वहीं छोड़ देना चाहिए और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से लेके चलना चाहिए। दैट आई I पर्सनली। just love that. I just love that. I just love that thing that you said. Like, I said, damn to the society. But you said that you should know where to restrict the society, how much the society should, you should let somebody enter. I think that's a damn good sentence. You know, Yeah. that you have the ability to say, bus, enough, take it, हाँ. leave it. I mean, It's we my cannot mind. walk naked on the street, right? We cannot walk naked. That's what society teaches us. We have to wear clothes and we have to remain civilized. पर मैं क्या पहन रहा हूं, उसमें भी सोसाइटी को इंटरप्ट करना है, तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। मैं अपने चाहे हाफ पैंट में घूमूं, विदाउट पैंट घूमूं, whatever जो भी है, that they are not going to say anything in that particular way. Wonderful, wonderfully said. I think I really love that part. And that's the spirit that I always look forward to in Oops. Because Oops is, when I say Oops, I said it, it's about Oops, I dare to do it, you know? I dare to do it. So that is what your spirit is also saying. Ki, mere se panga na lena, mere se panga na lena. But I've heard another story about you. May I? Okay, let me see. There are a lot of people who are saying hello to you. Preeti Mishra says, happy to see you here. And one frame story, that's Sangeeta Das Banerjee, the ace Hi. photographer and a very, very good friend of mine. So she Yeah, says, nice to Namaste. see She'll be you. coming up with her questions. Don't worry, Dhirendra. She'll be giving you some gunshots of questions. And I have Tamanna Tiku, my disciple, now a New Yorker. She says, Namaste, Didi and Dhirendra Bhaiya, bahut sundar baat. She's also a great Thank you, fan of Tamanna. yours. If you don't know, there's some hidden fans that you have in my Thank you, PT Tamanna. also. Yeah. In my home also at Aipa. And Mansi Mehta says, Namaste, Didi, Namaste, Bhaiya, Namaste. Hi, So sweet. Mansi. Namaste. And I'll take this opportunity to tell Tamanna, please share the whole live thing on the Facebook, please. That would be a great help. It's on the YouTube channel right now. Okay, so I have heard a story about you. It's about your Guruji's accident and how you uh, helped and how you stood by him, and also about your accident. दीदी, So I'm a good spy. I'm a good spy.
I'm just not a dancer and a mother and a diva and a mustkhor, mother, vagabond. I'm a good spy. So I know about that your Guruji went through an accident and how you stood by him and helped him. And I also know that you had a bad accident Hmm. and how he again stood by you and encouraged. So I want the people to know about the story of your life. Didi, I'm highly surprised because this particular story, either I have shared with Guruji, Guruji knows because I was there, or maybe very close one like Yogesh Bhaiya or Gauri Didi. I think these people, No, maybe not two, from three them. people, No, maybe no, no. no. No, no. Not from both Oh of my them. Not God, from both means of it has them. reached some other at some other extent anyway. Yes. So दीदी गुरुजी का एक्सीडेंट हुआ था उस समय आई वाज वेरी न्यू इन 2004 एंड एक साल ही मैं सीखा था गुरुजी से उससे पहले और उसके बाद एक एक इसके लिए मैं आपको बताऊंगा मैं आगरा में मेरे जो दोनों गुरु थे रुचि शर्मा जी एंड तापोश गिरी जी आई हैव लर्नड फ्रॉम देम एंड दे taught me what guru is basically and why they are guru. So this particular thing was in my mind from the very beginning since my childhood. So जब गुरुजी का एक्सीडेंट हुआ तो वो बहुत तकलीफ दे था मेरे को पहले 2 दिन तो हॉस्पिटल में नहीं जाने दिया गया हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे 18-19 साल के हो गए थे उस समय तो नहीं जाने दिया गया लेकिन एक ये था कि नहीं आई हैव टू गो आई हैव टू मीट एंड वंस आई वेंट इनसाइड दिस गंगाराम हॉस्पिटल एंड उसके रूम के अंदर जाने के बाद मैं बाहर ही नहीं आया मैंने सबसे पहले अपने गुरुमा भाभी जी के अपने पैर पकड़े और ये अभी मेरे को यहीं रहना है मुझे शुरू से एक सर्टेन इंटरेस्ट था जैसे ड्रग्स के बारे में जो भी ड्रग्स होती हैं एनाटॉमी के बारे में छोटा छोटा इंटरेस्ट था जितना भी उस समय Medicines. हाँ Medicines. मेडिसिन Yeah. हाँ एंड ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में भी थोड़ा समझ में आता था तो और मेरे को एक ये था कि मैं थोड़ा उस मामले में मेडिसिन के बारे में थोड़ा पर्टिकुलर था ये क्या कह रहा है डॉक्टर वो क्या कह रहा है तो मैं एक चंद चाहिए भी होता था मैं 22 दिन बाद उस कमरे से बाहर आया जाने के बाद आई हैड टू कम वंस और ट्वाइस टू कथा केंद्र टू गिव माई हाफ ईयरली एग्जाम बाय देन पर वो 2 ही दिन के लिए मैं बाहर आया फिर मैं बाहर नहीं आया उस कमरे से मैं वहीं रहता था वहीं सोता था वहीं खाता था और वो तकलीफ मुझे ऐसा लगता था वो मैं फेस कर रहा हूँ और उसके बाद मैं करीब 6 महीने गुरुजी के पास ऑलमोस्ट पूरी तरह से रहा और वो नॉट ओनली फॉर गुरुजी वो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस कहते हैं कब आपको ईश्वर क्या दिखा रहा होता है आपको नहीं मालूम बट दैट हैपेंड इन 2008 विद मी that accident and I was quite okay with that accident of course it was big accident 3 operations I had to bear and so many implants were in my body How and did you have? What kind of accident did you have? Didi, I used to love I was biker and कभी कभी संडेज को मैं बाइक रेसिंग पे भी जाता था तो ये मेरे को Ooh. बहुत शौक था पहले अभी भी बहुत शौक है बाइक का और उसका बहुत शौक है मैं अभी भी पहाड़ों पे जाता हूँ तो हायर कर लेता हूँ अक्सर So you have to तो teach me how to ride a bike because मेरा इस साल अरे का agenda है that I want to ride a bike. Don't want to go to अरे Ladakh, वाह but I want to ride a bike बट for बट sure. बट मैं आपको सिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी कौन सा लेना है ठीक है Yes. So tell me तो about that. वो एक्सीडेंट के बाद आई वाज क्वाइट काम मीन्स ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंट हो गया अब क्या होगा क्या नहीं होगा बिकॉज आई हैड सीन दैट बिगेस्ट एक्सीडेंट ऑफ गुरुजी एंड I had seen him coming out so I mean enthusiastically like ऐसे करके वापस आते हुए उनको देखा मैंने तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं नहीं वापस आऊंगा और दैट रियली हेल्प्ड मी अलॉट हालांकि डॉक्टर बोलते थे कि आप डांस नहीं करोगे क्योंकि ये हाथ पूरा नहीं खुलेगा राइट हैंड लेकिन ये भी खुलेगा और मैं नाचूंगा भी बिकॉज आई हैड सीन मच वर्स्ट देन दैट तो दैट हेल्प मी अलॉट वो मेरे को उसने बहुत हेल्प किया 3-4 साल बाद टू टू ओवरकम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एक्सीडेंट तो जो होता है I अच्छे के must लिए say, होता है because this Guru Shishya Parampara, which the हम्म, new generation is unable to understand, and it is something it's there with us. And they are inspirational stories. मतलब आजकल के बच्चों को शायद वो गुरु शिष्य परंपरा का जो एक महत्व है और जो हम्म, एक बॉन्डिंग है वो नहीं समझ में आती है पर हाँ जैसे आप बात कर रहे हो
जिस तरीके से आप अपने गुरुजी के पास थे 22 दिन हॉस्पिटल में, फिर 6 महीना, and then your guru, you know, helped you in the coming back to dance from your accident. That is really remarkable, and that's the bond. That's the bond. गुरुजी ने अभी भी हाथ इस तरह से पकड़ के रखा है मेरा। और पर मैं एक अच्छी सी शायद बात बताऊं कि इट्स नॉट ओनली अबाउट सीइंग द गुरु शिष्य परंपरा विद दिस, अगेन आई से लाइक Yeah. ब्लिंकर्स के साथ में देखने की जरूरत नहीं है उसको। गुरु शिष्य परंपरा में जैसे कहते हैं, आप भगवान को आप कैसे भी मानो, भगवान को ऐसे मान लो, हे भगवान घी दूध और वो दिया लेकर रोज पूजा कर लो, या कह लो हे भगवान जी वेयर आर यू, यू हैव टू टेक केयर ऑफ मी, यू आर माय फ्रेंड। तो Yes, आप ऐसे भी yes. ले सकते हो। तो आई फाइंड एवरीवन इन गुरुजी, लाइक पेरेंट्स, क्योंकि बहुत छोटी एज में आया, गुरुजी के घर पे ही रहा, तो एक पेरेंटिंग भी उनके जरिए हुई, एक शेयरिंग पार्टनर भी मुझे मिले, और एक गुरु भी मिले, एक टीचर भी मिले, एक लाइफ दिखाने वाले भी मिले। और उसके साथ मुझे लगता है ही इज वेरी वेरी ओपन टू द थिंग्स, ही एक्सेप्ट्स द आइडियाज, द थिंग्स आई कैन क्वेश्चन टू हिम। अनदर थिंग, आई डोंट सी माय गुरुजी विद अदर्स आई। लाइक उन्होंने कहा यार गुरुजी तो ऐसे, अगर मान लो सपोज ये कहे कि यार तुम्हारे गुरुजी ने तो ऐसा कहा, अच्छा ऐसा कहा गुरुजी ने, ये तो गुरुजी की गलत बात है, या ऐसा कहा गुरुजी ने। आई डोंट सी माय गुरु थ्रू अदर्स आई, I just go through only my personal experience, what my experience is with Guruji, because you get just influence, entire life going in influence, and you don't recognize yourself. What do you want? तो ऐसे में दूसरे की आंखों से देखने से तो आप फिर जजमेंटल वाली बात जो मैंने कहा था, आई डोंट ट्राई टू बी जजमेंटल। और गुरु को और मेरी मम्मी को तो मैंने बिल्कुल लॉजिक्स के बाहर रखा है। लॉजिक्स में रखूंगा तो परेशान होऊंगा मैं। Very nice. Very या nice. Well, Tamanna has a question, and all the questions are just bombing up now. Bhaiya, can you tell us what kind of rayas you had to go through to train your body back to normal again? तमन्ना, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, यहाँ मैं इसका बहुत बड़ा क्रेडिट अदिति दीदी को देता हूँ, क्योंकि मैं एक्सीडेंट से मैं शायद वापस आने वाला इतना आसानी से नहीं था, लेकिन साउथ अफ्रीका का टूर आया, अदिति दीदी ने मुझे बुलाया। आई वॉज नॉट श्योर कि मैं कर पाऊंगा, क्योंकि उसमें कंटेम्प्रेरी पीसेस भी होते थे दीदी के यहाँ, तो मैं श्योर नहीं था। पर दीदी ने कहा तुम आ जाओ, तुमको, एंड शी वॉज पेइंग मी टू प्रैक्टिस देयर, not to Oh, perform. I'm so I mean, humbly say to pranam to Didi. Not only pranam, I think I'm indebted to her a lot in my life. There are many things what I cannot इधर से प्लेटफॉर्म छोटा होगा उसके लिए कहना, लेकिन उन्होंने फिर स्पेशली उन्होंने, योगा सर आते थे हमारे, नवीन सर आते थे, विश्वायतन स्टाइल का योगा करते थे, उनको स्पेशली बोला, उन्होंने मेरी मसल समझे, उन्होंने मुझे उस तरह से हाथों को और मेरी बॉडी को ट्रेन करना शुरू किया, और मसल्स पे मेरे काम करना शुरू किया, और जो क्रॉनिकल फ्रैक्चर्स होते हैं उन्होंने देखना शुरू किया, दीदी ने पता करना शुरू किया, योगा क्लास में डाला, फिर कलरी क्लास में डाला, फिर डांस धीरे धीरे कराने प्रैक्टिस कराया, धीरे धीरे शुरू करो। 1 महीने बाद आई वॉज डांसिंग एंड आई वेंट टू द साउथ अफ्रीका, बिलीव मी। सो दिस ऑल amazing. मेरी बॉडी को ट्रेन करने का और उसमें एक दिमाग डालने का एक बहुत बड़ा पार्ट अदिति दीदी को देता हूँ मैं, आई थिंक। Wow, that's lovely. And Preeti Mishra says, true, I see these days we do not, but we are so much misguided by name of the guru. And this takes us unbelievable on this guru shishya parampara. I think, Preeti, you should not listen to everybody or anybody. You should live your relationship with your guru. Like for my guru, Guru Munna ji, for me, he was my bodyguard also. कोई लड़का बस स्टॉप में मेरे को छेड़ने आता था तो या लव स्ट्रक होता था तो मैं गुरुजी को लेके जाती थी। सो अब लोग कहते थे ये गुरुजी को लेके जाती है, वो सो व्हाट दी हेल, मैं किसको लेके जाऊं भैया, और एक लव स्ट्रक को लेके जाऊं क्या? सो दैट गुरु बिकम्स योर फ्रेंड। Yeah, exactly. I was 16, 17, and so it is difficult, and that's why. And over here also this thing, this is Neela Morris's Namaste Bhaiya and Didi, and नमस्ते। we have Varsha Dasgupta. Hello, very handsome and amazing Dhiru Bhaiya.
एंड वेरी ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग अलकनंदा दीदी। यहाँ पे हैंडसम बोल रही है और वहां पे भैया बोल रही है, दोनों साथ में नहीं चलता। अरे ये या तो तो मेरी प्यारी हैंडसम बोल सिस्टर लो, है। हाँ, या तो हैंडसम बोल लो या तो भैया बोल लो, दोनों चीजें एक साथ नहीं चलती है। तुम यार, ही सिंगल रेडी टू मिंगल। व्हाट आर यू डूइंग वर्षा दासगुप्ता? इवन यू आर सिंगल एंड यू शुड बी रेडी टू मिंगल। कम ऑन वर्षा, क्या कर रही हो तुम? और ये देखो उसके ऊपर से सुनो वो क्या कह रही है, भैया आई एम अ बिग फैन ऑफ योर माइंड ओपनिंग मूवमेंट्स। भैया बोलना बंद करो प्लीज। अरे वर्षा, अरे ये तो प्यारी Okay, छोटी you should बहन learn दीदी। that you can't insult on the show, भैया भैया। मैंने So इसको प्रॉमिस किया है हम दोनों रियाज करेंगे एक दिन कथा केंद्र में वर्षा हाँ, को। like I do with Abhimanyu ना, Abhimanyu helps me to do the या riyaz, so I don't call आपका him लेवल, भैया, he's a आप अपने friend। लेवल के पास जाएंगे, हम लोग का हाँ, लेवल है ये, ठीक no, है। we are friends. We are friends. It's basically you या have that openness with your friends. So we are Kathak Kendra friends of 1990s, yeah. So हाँ, obviously it is, but I don't call him Bhaiya. He's a friend. He's a friend. That's it. Don't call या every Dhirendra Bhaiya. क्या है? तुम क्या कर रही हो? हाँ, but there's also very interesting question that I have for you, because you just mentioned, ha ha has rahi hai ab. I have to teach her a few things also. Okay, so you just mentioned Aditi Didi. Now we are coming from Raju Bhaiya, which is a traditional, Kathak, Jaipur Gharana and everything. And now with Didi, Aditi Didi has the contemporary style also, the traditional also, but the contemporary style also. So how did you think of bridging it together, and what made you go, and how was your experience with Didi? I know it is wonderful. I'm waiting for my next birth to go to Aditi Didi, and I've told her कि हाँ मुझे बोलना भी है, अदिति दीदी अगले अगले जन्म में मैं आपके पास आ जाऊंगी, प्लीज आप फिर से जन्म लीजिएगा। बट हाउ डिड यू ब्रिज इट ओवर? हाउ डिड यू मैनवर द होल थिंग? दीदी, इसमें मुझे फॉर्चुनेटली ब्रिज नहीं करना पड़ा। मैं आपको बताऊं, मुझे बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ी। इसकी वजह ये थी कि मेरा दिमाग बहुत प्लेन था, मतलब बहुत कुछ नहीं था। लाइक द जनरेशन ऑफ टुडे हु हैज गॉट द एक्सेस ऑफ गूगल एंड एवरीथिंग, दे हैव ऑलरेडी अ लॉट इनसाइड देयर माइंड, दे आर क्वाइट ओपन टू द थिंग्स एंड वो दुनिया से जुड़े हुए हैं पर नहीं भी जुड़े हुए हैं। लाइक ऐसे बात नहीं करते हैं, लेकिन फोन के जरिए उन्हें सब कुछ पता है। तो मेरे टाइम में इतना नहीं था, तो ये लगभग खाली था। तो इसमें सही चीजों की इंफॉर्मेशन की एक्सेस की जरूरत थी बस। गुरुजी के पास, दोनों के पास मैंने सीखा है, तो इसलिए मैं एक बात बोलूँ, गुरुजी के पास ये है, Guruji inspire and influence his students to see the world, to experience the things, to work with other people and realize the thing with your experience. Guruji always inspire. So I find him very contemporary too. एंड उनका है, वो एक तरह के मूवमेंट में लंबे वक्त तक नहीं टिक पाते हैं। वो उनको चेंज चाहिए, हर तीसरे दिन एक नया चेंज चाहिए। वो कभी एक कोरियोग्राफी नहीं रिपीट कर पाते हैं, कभी एक मूवमेंट। इतना हर क्लास, हर साल की हर क्लास में पूरी क्लास अलग होगी, वो पिछली क्लास से रिपीट ही नहीं होगी। ऑनर्स फर्स्ट ईयर की 5 क्लासेस चल चुकी हैं, तो 5 लोगों का अलग कोर्स होगा, किसी का सेम होगा ही नहीं। सच अ क्रिएटिव पर्सन। And if I'm journeying from one creative person to another creative person, I didn't have to create any kind of bridge. पर दीदी के यहाँ देखने का नजरिया पूरा अलग है। अलग इन द सेंस, एज आई सेड, ये मैंने शायद दीदी से सीखा है कहीं ना कहीं, नॉट टू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी पीपल, जस्ट लिसन टू योर सोल. And what she sees, general, very general thing, minute thing, like for example, uncharted seeds, if we say, like दीदी की composition है, जो seed chart में है ही नहीं है, means वो ऐसे शब्दों को लाना, ऐसी चीजों पे रिसर्च करना, मीन चीज है, उसकी एक एग्जिस्टेंस है, जैसे हवा है, देख नहीं सकते हैं बट एक्सपीरियंस कर सकते हैं. शी सीज दोज थिंग लाइव एंड कनेक्ट दिस दीज ऑल द थिंग्स विद डेली टू डेली लाइफ थिंग्स. तो जैसे कोई भी मतलब ब्रूटैलिटी को, सोशल ब्रूटैलिटी को उन्होंने विदिन में देखा, एक निर्भया केस को एग्जांपल लिया, उसमें विदिन में जब हम लोग कर रहे थे तो उन्होंने हमें एक बोला कि तुम लोग क्या करोगे अगर सपोज शिवा अपनी वाइफ को लेकर जा रहा है हाथ में, सती को, उसके टुकड़े गिर रहे हैं, तो हाउ ही इज लिफ्टिंग, हाउ सॉरो, व्हाट काइंड ऑफ पेन ही इज गोइंग थ्रू.
तो वो उठाओ, तो वो हम लोग को एक्सपेरिमेंट करके सभी को देखते थे. शी यूज्ड टू गिव अस द चांस आल्सो टू एक्सप्लोर मोर, एंड उसको लेकर उसमें से निकालना, मींस शी ऑलवेज सीज beyond the boundaries actually, with even if it is his very classical production, if you see, it is beyond the boundaries within the classicism. सो ये एक अलग ही सोच है. वो मुझे लगता नहीं कि मेरे सॉरी भारत में भी मुझे मुझे बहुत कथक में तो खैर छोड़ी है, मुझे भारत में ही नहीं दिखाई देता ये. तो वो सोच का वो स्पैन जहाँ आपकी सोच बंद हो जाए वहां से वो शुरू होती है, तो वो मुझे बहुत Exactly. पसंद है. Exactly. So, how much more have you traveled? Like, what is your travel uh, through dance? How much have you traveled with dance? दीदी a lot. Physically and so soulfully. दीदी मैं बहुत ट्रैवल किया हूँ, और मुझे पसंद भी है, स्पेशली विद अदिति दीदी एट दृष्टिकोण डांस फाउंडेशन. आई ट्रैवल्ड अ लॉट. फिर वहाँ से आने के बाद मेरे अपने प्रोडक्शंस मैंने प्रीमियर किए थाईलैंड में या कहीं भी जहाँ भी, और लंदन में भी हुआ जिसको दीदी ने और गुरुजी ने सबने कोरियोग्राफ किया था. तो फिर मैंने अब अपने आप ट्रैवल करना शुरू किया पिछले 3 बरस से, और 2 बरस से मैं इतना ट्रैवल कर रहा हूँ, दिल्ली, दिल्ली से आगरा, आगरा से दिल्ली, दिल्ली से आगरा. वो तो हम सपनों में ट्रैवल कर ही रहे हैं. मतलब सपने में स्विट्जरलैंड पहुंच गए, सपने में मैं पोलैंड पहुंच गई, सपने में मैं एम्स्टर्डम पहुंच गई, सपने में मैं यूएस पहुंच गई तमन्ना के पास. सो यू नो, yes, you have come to a very crucial point where I have to ask you, first of all, being a male dancer, which is difficult in our society. मतलब एक डांसर होना ही हमारी सोसाइटी में डिफिकल्ट है. बीइंग एन आर्टिस्ट, being an artist itself, it makes it very difficult. Even my school made it really tough for me. They thought artists really can't do. Now they salute, that's a different thing because you make a name for yourself. Being an artist is difficult. Being a male artist, it is difficult. Then on top of that, there's COVID and pandemic, the whole thing. Whole thing. How did it affect you, and how did you let life take on? There's a very important question Preeti Mishra has asked, which I'll put up, but I need this answer first. Didi, I don't know why it is being tabooed, like ऐसे एक तरीके से कि मेल डांसर, मेल डांसर, मेल डांसर. आई नो एक छोटे शहर में अगर मैं आगरा में डांस करूँ तो घुंघरू पहन के लड़का क्यों नाच रहा है, या ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से अगर मैं बिलोंग करूँ, तो यस इट इज लाइक दैट. बट समहाउ मुझे लगता है मेरे साथ सिर्फ एक मेल डांसर ही नहीं थी. आप मुझे अच्छे से देख सकते हो, मैं बहुत अनयूजुअल हूँ, और पहले और भी ज्यादा अनयूजुअल था. अभी तो स्टिल ट्यूबलाइट फिट है, पहले तो ट्यूबलाइट भी नहीं थी, पैचेस थे, एंड बहुत अलग लगता था मैं. तो ऐसे में मुझे लगता है कि आई वॉज क्वाइट फॉर्चुनेट. आप ही हमेशा कहते हैं शो में कि किस्मत से ज्यादा और उससे पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है. तो उस समय मेरे कोई खास काम नहीं था, मेरा सिर्फ एक काम था, रियाज करना. एंड समहाउ दैट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय, पहले तो गीता दीदी ने ही मुझे बहुत काम दिया, उन्होंने मुझे बहुत काम दिया, कथा केंद्र ने मुझे बहुत हेल्प किया, गुरुजी ने बहुत हेल्प किया, एंड सबसे ज्यादा अदिति दीदी ने, जो एन अनयूजुअल लुक को लेकर भी उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, मुझे डांस से मतलब है, बंदे क्या है क्या नहीं है, क्या हाइट, पर्सनैलिटी, क्या सिस्टम, उससे मतलब नहीं है. तो मुझे फॉर्चुनेटली नाचने को तो मिला शुरू से, Right. एंड मुझे मतलब रिसीविंग मिली, मुझे नाचने को शुरू से मिला, मुझे जितना रियाज को मिला उतना नाचने को भी मिला. और वो रिसीविंग मिली, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे लिए एज मेल डांसर बहुत बहुत मुश्किल था. एज मेल डांसर जो मुश्किल था वो था मेरा फाइनेंशियल पार्ट, क्योंकि मेरे Yes. पेरेंट्स को ये बर्दाश्त नहीं था कि मैं जाकर डांस कर रहा हूँ, एक हमारे घर से एक बंदा लड़का जाके डांस कर रहा है, घुंघरू बांध रहा है. तो वहां से मेरे फाइनेंसेस रोक दिए गए थे. उसकी वजह से जो मुझे लगता है अभी, आई वुड से रिग्रेट, उसके सबके एक पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट आता है उसका. तो मुझे लगता है वो फाइनेंशियल उस समय मुझे बहुत ज़रूरत थी मेरे रियाज के लिए. तो मुझे रियाज और प्रोफेशनलिज्म, 17 साल का एक लड़का भाग रहा है पैसे कमाने के लिए, भी उसे 200-300 रुपये कुछ तो मिलेगा, तो उसका उसका हफ्ता निकल जाएगा. तो दैट्स हाउ आई मीन, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था कि मैं रियाज को दूं, क्लास को दूं, टाइम कैसे दूं. तो मैंने बहुत गाना क्लास या पखावज क्लास में बहुत छुट्टी मारता था. योगा क्लास तो मैं बहुत ही कम जाता था, क्योंकि सुबह निशा सुबह, दीदी ने 0 दिया होगा तुमको. हाँ
दीदी फॉर्चुनेटली निशा दीदी नहीं थे उस समय। उस टाइम में नहीं बच गए तुम। शंकर आपके गुरुजी थे और अच्छा। कविता दीदी थी। कविता दीदी ओ, तो स्वीट्स, कविता ठाकुर दीदी, उनको तो स्वीट हार्ट है वो। उनको तो मैं दीदी ऐसे कर देता था और मैं थोड़ा सा फ्लेक्सिबल था तो उनको दो चार आसन खूबसूरती से करके बताता था, वो she खुश हो loves जाती men. Don't worry, she loves men. We all love थी। men. गुरुजी के हम सारे शागिर्द, we love men. और मुझे पढ़ना पसंद था तो मैं थ्योरी अच्छे से बता देता था और एग्जाम में पास हो जाता था, तो वो खुश थी मुझसे। मुझे गाना क्लास बहुत पसंद थी मेरी, तो मैं वहाँ ज़रूर कोशिश करता था शाम को थोड़ी देर के लिए 1 घंटा 2 घंटा बैठ के कुछ करूँ वहाँ पर। और बाकी मैं कुछ नहीं करता था डांस के अलावा। डांस क्लास भी हफ्ते में 3 दिन तो जाता ही था, बट बाकी के मेरे को इसका इंतज़ाम करना पड़ता था। तो गुरुजी But सपोर्ट how करते do you think your family is now reacting with you being so successful? Because again, I would say, Dhirendra, that when I say that men artists, many of the classical dancers, especially the male, they confuse their personality, and somewhere, that thing, a little bit of I don't know how to say it or put it, we all effeminate know something? about it, yeah. Little feminism, or मुझे लगता है हम ज्यादा मर्द बन जाते हैं, मतलब औरतें ज्यादा मर्द बन जाती हैं उनके सामने। Didi, For can I you, say something pretty openly yeah, about this? yeah, Yeah. please, please, this is Uh, all about oops. uh, See, even a doctor cannot decide something like which chromosomes is reacting how. तो Y के साथ Yeah, X बन रहा है, X के साथ Y जा रहा है. Everybody comes with the Y chromosomes and then X chromosomes. I mean, certain kind of effect creates. तो उसके बाद वो yeah. XY बनता है, YX बनता है, which is more prominent. तो ये खैर इसमें ज्यादा नहीं जाते हैं. तो जो effeminate or not effeminate है, that comes in the womb by the God. So who are we to But why is decide it, that why, it is but like this? And this is but so why do called we see it usually. so much into the classical fraternity? Like when I you dance, we see an exuberant man dancing. How we Mhm. perceive a man, the Mhm. Shiva or the Natraj, or the way we see Raju Bhaiya, the way we Mhm. see Birju Maharaji, Maharaji, or where we see Munna ji, Guruji, Mhm. so or Ramun Bhaiya. So there's Mhm. an personality which comes, or Durga Lalji, whom I watched. So there's a personality which comes across. Like when I had to write for you, I wrote like dance like a man, Mhm. because दोनों बने हैं ना, नारी नारी और पुरुष. So somewhere that, I and don't now know how maybe about, how right I am, दीदी. लेकिन मैंने yeah, एक और चीज नोट की, and I'm not favoring anything right now. Okay, what I have noticed and gone through the experiences, those people who have certain kind of effeminate character, what we are talking about, they have one access, like एक I don't know, एक sense उनका खुला होता है. If you happen to see in the designer field, architecture field, dance field, and they are in painting field, I have seen many, and I have gone through like and I have talked to some researcher also, and I'm sure okay, you might know some of them. If you happen to meet them, I'll personally tell you about them. दे हैव एक विजन, एक खुला हुआ है उनका. वो क्रिएटिवली चीजों को बहुत खतरनाक तरीके से देखते हैं. दे आर वेरी क्रिएटिव. So if they come into the dance and find their destination into it, we cannot stop. We cannot say right and wrong. The only thing I can say right, or I don't think anything is wrong for me. Um, पर वहां प्रॉब्लम आती है कि आप आ तो गए बट आप इस आर्ट को 100% नहीं दे रहे हो. मतलब मैं कह रहा हूं आप एफेमिनेट रहो, exactly, यूं करके डांस कर लो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. पर जब पैर नीचे देखूं तो पैर चलना चाहिए और लय चलनी चाहिए और आपका काम होना चाहिए कि आप मेहनत करके स्टेज पे चढ़े हो. आई डोंट माइंड इफ इट right. इज effeminate, if it is not effeminate, or you are yourself, you yourself feel yourself Radha or Krishna, whatever. I don't mind. I want you should work hard and then come on stage. That is something I believe. डांस को मैं डांस देख रहा हूँ, किसी एक सर्टेन कैरेक्टर में नहीं देखता मैं शायद. For भाई me, दैट्स it लाइक is like जजिंग. it doesn't matter. It is what is right or wrong. Is there's nothing right or wrong in this world. Everything Absolutely exists. But when I exists. go to see a certain kind of a performance,
So I go, ki, okay, I'll get this. If I'm going for Aditi Didi's performance, I know what I'm going to gather from them. Okay, if I'm going to Raju Bhaiya, Rajendra Gangani Guruji's performance, then I know what I'm going to seep out from them. You know, so that is, when I see this, I become confused. What am I supposed to take back? That is my confusion. Didi, I think we are again seeing with the society वाला चश्मा. I think पहला तो ये सोसाइटी वाले चश्मे से ही देख रहे हैं हम लोग बहुत ही ज्यादा. दूसरी चीज मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे स्ट्रॉन्ग डांस चाहिए. वहां पर आने के बाद भी वही, आप तरीके से नाच नहीं रहे हो और आप अपना वो, फिर वहां मुझे वो अदाएं अदाएं लगती हैं और वो लग सकता है, हम लोग फिर वहां जज that करने is लगते what. हैं. अगर स्ट्रॉन्ग खतरनाक डांसर हो, भले ही वो एफेमिनेट हो, और वो दिखा दे कि नहीं ये है लय, ये है काम, ये है तैयारी और ये है मेरी नॉलेज, तो मैं Yes. उसको सलाम करूंगा. वट एवर ही इज, आई डोंट माइंड. I agree on this point with you, 100 and 200%. जी. Whatever you are, give me good dance, give me गुड good डांस. work, and No that is what is mediocrity. important. No mediocrity. There are hell a lot Yeah. of people like this in the Yes, world. yes. And there's a question, for the beauty of bringing the best in contemporary, one has to be strong in the traditional training. What would you say about that? Wow, very lovely question. I told I you, na, think, Sangeeta will send you my God, bouncers. very nice, very nice. Uh, संगीता जी, मैं बहुत ही ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ट्रेडिशनल हूँ या बहुत कंटेम्प्रेरी हूँ, पर आई थिंक आई कैन नॉट सिंक विद द ब्लिंकर्स, ये जो है, और मैं एक बाउंड्री में नहीं सोच पाता कि, लेकिन बाउंड्री इसलिए जरूरी है. आपकी पहली एजुकेशन, आपकी जो एक सर्टेन, जैसे आपको क ख ग घ पढ़ के अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल होना चाहिए, लिख कर समझ कर आप दूसरी लैंग्वेज को समझेंगे तब जब आपका अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल होगा. तो आई थिंक लॉन्ग एंड हैवी एजुकेशन इनटू योर particular stream is very much needed and very much important to understand other. Like आप अपने आप को खुद को अच्छे से बेहतर समझोगे तो आप किसी दूसरे को बेहतर समझ पाओगे, क्योंकि खुद से रिलेट करके देखोगे मैं तो ऐसा हूँ, वो ऐसा है. तो इट्स द सेम थिंग इन एवरीथिंग, लाइक इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. डांस को मैं ज्यादा अच्छे से कंटेम्प्रेरी को समझूंगा यदि मुझे अपने डांस की एजुकेशन मेरी स्ट्रांग होगी. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ कंट्रोल, हैव अ long education into your personal particular stream what you are pursuing. Very important that is. I absolutely believe in. Absolutely. So, after some heavy dose of topics that we are discussing over here, and which we want to discuss in OOPS, because OOPS is all about breaking the boundaries or crossing the bridges and to talk openly, which the society wants us to be mum about or be silent about. So, it is all Yeah. about how we cross those boundaries and open and speak about it and live and let live also. But there's a very naughty question for you that I will put it to you right away. Where are you, Preeti Mishra? Yeah, 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 yeah. Here you go. Oh, where did it go? But I will show you. Okay, wait, wait, wait. She asked, why are you single? Why am Why I are you single? still? um I don't find the time to get mingled with the people. That's the another problem. And second thing, यहाँ मैं थोड़ा, आप मुझे बोल सकते हैं जजमेंटल हो सकता हूँ, क्योंकि I have a tendency, little bit of tendency of, I had, maybe I'm overcoming with that slowly, getting dependent on someone, and I started finding the happiness in other person. The happiness what I should find within, like I should be inspired with Didi with you. I think finding happiness from within, I start chasing the happiness and trying to see that certain kind of happiness from other person, and the expectation, then insecurities, that system, वो मुझ में होने लगता है. उसको, वो शायद बेसिक कैरेक्टर है, उसको पूरी तरह से चेंज तो नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता, पर मैं उसको समझकर उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ. अगर एक्सेप्ट करूंगा कुछ अच्छा या बुरा, तभी शायद वो ठीक हो सकता है. तो मैं कोशिश कर रहा हूँ प्रीति इसके लिए. अगर जब हो जाएगा और जब मैं अपने आप में अपनी खुशी ढूंढूंगा, तो आई विल डेफिनेटली गो टू गेट मिंगल. आई विल बी द फर्स्ट वन.
I'll open a dating account. Don't worry. Yeah, yeah, we'll check out the Tinder. Yeah, Why, I will. why is Tinder such a obsolete word in our dictionary? Because it's very normal to have a dating app, you know? Every second movie is describing about Tinder and right and left swipe. Why? Yeah. What? Why can't we, being classical artists, we do not come from another planet. We are living in this whole world. So why, if But we want Didi, to find, actually, Didi, actually, we just what we do, we connect our identity with one thing. What we are doing, हम लोग ये हैं, हम लोग ये हैं. हाँ, There are plenty of aspects of life we have to explore. मैं dancer भी हूँ. I'm a very good son of my mother and मुझे मेरे बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद है. मेरे भाई के बच्चों के साथ बहुत पसंद है. मुझे अकेले पिकनिक पे जाना बहुत पसंद है. वहां बिल्कुल डांस करना पसंद नहीं है. तो देर आर मेनी exactly, एस्पेक्ट्स ना. और शाम बिताना कभी exactly. कभी बहुत पसंद है. Exactly. है ना. I love wearing dresses and I love wearing jeans and tops. And I just go and freak out. Why do I have to be in the box of a classical artist? क्लासिकल आर्टिस्ट No, व्हाई. That's why? just the work what I'm doing and I'm passionate. That's my passion. That's Yes, it. And there are yes, many aspects of life we can explore. yes. So I would like to know what are the other aspects of your life that you love to do beyond dancing, and what are your Hmm. interests? Singing or shopping or something like I swimming think or poetry, I think बाइकिंग लॉन्ग biking. रूट पे. हाँ. और थोड़ा बहुत गाना गुनगुनाना. और Please, Ishad. दीदी दीदी मेरा 1.5 महीने से गला बैठा हुआ है. मैं भी कुछ कोविड जैसा ही कुछ कुछ हुआ था. पता नहीं पर अभी हाँ, क्या गाऊं मैं. पर कुछ कुछ तो गुनगुना दो. नाचने को नहीं बोलूंगी because this is not the platform to dance. This is all about having fun and knowing your journey. But something that you love to sing. What you love to sing? हम्म. बीते ना बिताए रहना बिरहा के जाए रहना बीते ना बिताए रहना हाँ बिरहा के जाए रहना भीगी हुई अखियों में लाख मनाए रहना बीते ना बिताए रहना हाँ बिरहा के जाए रहना. वाह, अमेजिंग. अगर तुम ऐसा गा रहे हो खराब आवाज के साथ, मतलब जो तुम कह रहे हो, which I don't believe, but मतलब then when हाँ. your voice is absolutely clear, how awesomely you'll be singing to your girlfriend, which हाँ. I hope you find fun. And this girl is very naughtily saying, Sangeeta, he wants peace, maybe. Come on. Don't tell me, Sangeeta, we women don't I'm keep our men very in peace. the certain times for the peace. I think हाँ, there are हाँ, certain times जब yeah. पीस चाहिए. नहीं तो हर चीज चाहिए ना. सारा मक्खन मसाला और पीस और सादी रोटी और पराठे सब कुछ चाहिए मुझे. लड्डू भी चाहिए. हाँ, लड्डू भी चाहिए टाइम टू टाइम बिल्कुल. But Dhirendra, tell me, like these one more Preeti is asking. Yes, we'll end it with his song only. Don't worry, Preeti. But tell me that what are your dreams with dance, and what is that you look forward to in your career or in your life that is coming forward and after COVID? What is that you want to go along with? I think, Didi, I have planned a lot in the past, but I think right now I don't plan much. मेरा ये रहता है कि अभी मुझे जो पसंद है मैं उसे ठीक से करूं. मेरा भी ये रहता है. जैसे मुझे अभी सिखाना पसंद है. आई एम नॉट थिंकिंग कि मैं इतने स्टूडेंट्स पालूंगा, इतने सारे बनाऊंगा, इतने सारे प्रोड्यूस करूंगा, डांस को वहां ले जाऊंगा. यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट फ्यूचर. सो एंड तो इसीलिए मुझे कुछ पता नहीं है उसके बारे में. लेकिन अगर मैं प्रेजेंट में मेरे पास स्टूडेंट हैं तो मैं उनको 1 घंटे की बजाय 3 घंटे भी क्लास देता हूँ. रियाज भी उनके साथ खुद खड़ा होकर करता हूँ, उन्हें भी कराता हूँ.
तो मैं बहुत प्लान करके नहीं चल रहा कि मैं बड़ा होके बहुत अच्छा, आगे जाके मेरी उम्र बढ़ेगी तो मैं बहुत अच्छा डांसर हो जाऊंगा, समथिंग। पर मैं अभी जो भी वट एवर आई एम डूइंग बाय होल सोल, मतलब पूरे दिल से मन से पूरा करने में यकीन रखता हूँ। बहुत अभी प्लान नहीं कर रहा हूँ मैं, सच बताऊं तो। बट हाँ, एक है कि मैं हूं या ना हूं, एक एक और मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट मेरे जैसा फॉलो करें या वो बने, वो अपने जैसे भी बनना चाहे वो वैसे बने, बिकॉज आई वॉज गिवन दिस फ्रीडम एंड आई गिव दिस फ्रीडम टू एवरी। तो ये जरूर चाहूंगा कि जो भी इसके साथ जो भी इस कर रहे हैं, जो भी आर्ट कर रहे हैं, उसे जैसे भी कर रहे हैं, उसे थोड़ा सा मैं हूं या ना हूं, करूं ना करूं, जस्टिफाई जरूर करें उसे, अपने काम को, और अपनी मेहनत को रिस्पेक्ट जरूर करें। जो वो अभी कर रहे हैं 3-3 घंटे, अभी टाइम दे रहे हैं, 1 घंटे आना, 1 घंटे जाना और 2 घंटे क्लास में रुकना, वो 4 घंटे दिन के उनको रिस्पेक्ट करना सीख जाए, इतना बस मेरा जरूर है। तो वो प्लान नहीं बिल्कुल। कहूंगा, इच्छा है। You are such a nice person, and I've heard a lot about you. And I have seen you. मतलब आते जाते मैंने आपको देखा हुआ है. जी जी। You're such a nice son, I believe. Do you think you've been able to change your family and your parents' perception about choosing this career? And do you think boys in your family or your society who would like to follow your passion and see you as a hero? Do you think it is going to get a little easier for them with your success? फैमिली के लिए मैं ये कहूंगा कि आप किसी को बेहतर है खुद को चेंज करो। दूसरे को चेंज होना होगा तो आपकी अच्छाइयाँ देखकर चेंज हो जाएगा। नहीं चेंज होना होगा तो आप सर पे डंडा मारते रहो तो भी कोई चेंज नहीं होगा। तो मेरे पापा इज नो मोर, लेकिन आई डेफिनेटली वुड हैव लव टू चेंज हिम अ लिटिल एंड आई वांटेड हिम टू सी मी नाउ। तो Yeah. हालांकि he accepted me later he Mhm. when he was like before he died in 2012 and उससे पहले एक एक्सेप्टेंस मेरे लिए घर में हो गई थी। आई वॉज वेरी हैप्पी विद दैट। सो आपको चेंज नहीं करना, मोरली दे आर वेरी मच विद मी एंड फाइनेंशियली आई एम स्टैंडिंग बाय माई ओन। सो चेंज नहीं करना है। घर के लिए मुझे कोई हीरो नहीं बनना है, एक नॉर्मल आदमी, एक नॉर्मल भाई, बेटा, नॉर्मल भाई, सो दे कैन शेयर एवरीथिंग, दे कैन टॉक टू मी एनीथिंग। बच्चों के साथ ऐश मचाता हूँ मैं बहुत, अब अपने घर वालों में बड़ों के साथ कम जाता हूँ। मेरे छोटे जो भतीजे हैं, बहुत सारे भाई भतीजे हैं मेरे, 9 हैं करीब भांजे भतीजे। Oh, हाँ, तो बहुत छोटी सी फैमिली है हमारी, ज्यादा नहीं है। नौ कि के बाद तुम छोटी कह रहे हो? हाँ, बस पापा हार्ड वर्किंग थे, 4 भाई 2 बहनें हैं। और पापा बहुत हार्ड वर्किंग मम्मी के साथ थे। What the और family, फिर एक सबके जॉइंट दो दो फैमिली हैं, में गए। और सारे भाई बहन भी हार्ड वर्किंग है, सबके 2-2 हैं। तो सब तो तुम्हारी कमी को पूरा कर रहे हैं। पूरी मेरी कमी, मेरी मम्मी भी कह रही है तू मत कर, शादी नहीं करनी है। तो मैंने कहा मम्मी देखो, सही मिला तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। मेरे को अपने मेरा मन नहीं है शादी करने का। तो मैं I बहुत like that. इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूँ। कहते हैं, मत कर मत कर, मैं 3 से बहुत परेशान हूँ, 3 बहुओं से। बट एक्चुअली दे आर ऑल माय भाभीज आर वेरी गुड। तो मजाक में मम्मी बोलती है एंड वी आर ऑल लिविंग टुगेदर इन वन होम। Wow, joint Yeah, family. very joint family. We cry together, we fight together, we love each other, but at the same time So we are like this sweet. too. So तो sweet. मैं घर कम Very जाता हूँ nice. इसी वजह से, क्योंकि मेरा घर जाते ही जो बैंड बजता है मुझे अच्छे से पता होता है, खींचातानी हो जाती है बहुत ज्यादा। तो पर I जाना तो can होता है, understand. मम्मी है। Oh, मम्मी with है। such a charming man out here and such a nice man out here, I can definitely understand. When I want to take you for a date, even I want to take you for a date. वो So I would can love to go दीदी। understand. I would love to go with you. और फिर भी हम दीदी My और ऐसे ही privilege. बुलाएंगे. Okay, date Would be doesn't my mean that you privilege. have to have something. Huh? It would be my privilege. Oh, that's so sweet. Being with such For a people, it is like-minded okay to lady. have a date with a young man. It is not a problem. And you don't become lovers if Absolutely you go no for a problem. date. For him, I'm always going to be Didi, and for me, it's I always going to get be to learn a lot of Dhirendra. maturity from Didi. Huh?
What? Come again? I get Come to again? learn lots of mature things from Didi. Lots of experiences. Yeah, especially which have business and हाँ yeah, वो तो definitely जरूर. not a problem, not a problem at all. But here comes a very serious question, Bhaiya. What is your education? Comes Neela More. Yes, education plays a very important part with the younger generation, and since our generation that we come from a very educated family, and education really churns our minds. So yes, what is your education, and how do you think education has helped you with your art and your life? नीला जी, मैं एजुकेशन के बारे में यहाँ एक इम्पोर्टेंट रिवलेशन देना चाहता हूँ कि मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, फाउंडेशन का एग्ज़ाम नहीं दिया था, जो मैंने अब मेरा ग्रेजुएशन वापस कंप्लीट हुआ है, दैट हैड टू हैपन इन 2005. 5 एंड 6 में जो होना था दैट आई कंप्लीटेड नाउ. एंड मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से ग्रेजुएट हूँ, और मैं उस वजह से मेरा सर्टिफिकेट्स अटके हुए थे. मेरे पास मार्कशीट है, पास हूँ, सब कुछ है, पर मेरे पास डिग्री नहीं था. तो मैं यहाँ पर कथक केंद्र में एज ए 12th स्टैंडर्ड पास लड़का की तरह से हुआ हूँ. बट यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा, एजुकेशन फॉर मी, दैट काइंड ऑफ एजुकेशन विच इज़ काइंड ऑफ course wise, book wise, years wise, that ended long before. That ended long before. The kind of education I'm going through with my life and with my experiences nowadays, especially for last 2 3 years, last 1 year, I think I would say there are lots of changes happened in life, and pandemic came, and I think आई वॉज क्वाइट अवेयर बिफोर दैट. पर ये भी एक वक्त मिला खुद को वापस से 3 महीने भी अगर घर में रहे तो सोचने समझने का वक्त मिला. काफ़ी सारे अपहीवल्स आए, तो उनसे मुझे लगता है बहुत स्पीडी सीखने को भी बहुत कुछ मिला. एंड मेरे अंदाज से ये लाइफ की एजुकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इफ आई एम नॉट I मिस्टेकन. so much agree with you. You know, people have degrees, but they don't have education here. They are just holding degrees. या But there's some people who might not have degrees, but they're so civilized and they're so educated by their mind and spirit that it is amazing. एब्सोल्युटली दीदी. You know, हाँ. education of life, which you said right Education now. of life, if you are writing it in your mind and subconscious, it plays a role. Yes, definitely. It definitely plays a role. And Sangeeta says so wonderfully said respect, integrity, and dedication is so required for every artist, passion, or profession. Perfectly said, Sangeeta. So well And I'm said. really enjoying my conversation with Dhirendra. And this is for the first time that we are talking in lens. You know, it has been always with Dhirendra that either I've been in the show or we've met at Katha Kendra, just hi, हाँ. bye, hello, Dhirendra, hello, Didi, and that's what this is. But you know, as in when I'm doing oops, I somehow choose the artists who I feel are very good human beings. For me, it is very important that you are a nice human being first and then an artist, because we are born as humans. If you don't have the integrity as a human, then I don't think you will be so true to Very true, be an Didi. Very artist. true. One has to So be human first. That humanity, if you don't have, then what else you can achieve in your life? exactly. Whatever you can achieve in your life, that's zero if you are not, if you're inhuman. Yes. Uh, So little things that I know about him, or it's just that you get to feel when you meet a person that what are the vibes that you get. So I think that is very important for me, very true. that I get the positive vibes definitely also from you, and definitely wanted to know you more. And Nainika wants to know more about you. We know that you had your share of struggles while pursuing dance as a career profession. How did you push yourself to overcome some, if not all, the obstacles? Nainika, I think time teaches a lot, and circumstances push you to go beyond what you can do. है ना, वो जो सर्कमस्टेंसेज आपको जो कर सकते हो उसके बाहर पुश कर देती है. तो वो सर्कमस्टेंसेज ने जैसे फाइनेंशियल या मोरल सपोर्ट जिस तरह के थे, वो सर्कमस्टेंसेज और टाइम के साथ आते गए. बट आई वुड से नॉट ऑल, एज यू सेड. Yes, I'm still struggling to overcome with some traumatic things in my life, and
there are lots of, not one or two, but there are two, three majors, or maybe one major thing, something like this. Those all the traumatic things are, and I accept them for lifetime. Suppose I have some kind of injury and I have to live with the pain. I have to dance with that pain. So that is a part of my life. I cannot eradicate that because it's not reversible, right? So I have to live with that pain, Nainika. And anyway, I would like to tell about Nainika. Nainika is a very intelligent girl, according to my perception. तो वो पेन के साथ मुझे नैनिका रहना पड़ता है. तो there are pains what I accepted as my pain, and I don't want to eradicate, and I'm leaving it on time. So let the time play its role. If I'm juggling and struggling with that, तो वो तो मैं इसका मतलब स्ट्रगल करने के लिए उसे बार बार रोज याद ही कर रहा हूँ, तो वो तो मुझसे दूर नहीं जा रहा ना. तो बेहतर है कि मैं उससे जगल करना छोड़ूं और बेयर करूं कि दर्द है, तकलीफ है. तो वो शायद, एंड आई शुड लीव इट ऑन टाइम, लेट द टाइम प्ले द रोल, एंड आई एक्सेप्ट दैट. आ रहा है तो आने दो, कोई बात नहीं, आ जा, आजा, ऐसा वाला है. सो वी कैन नॉट गेट रिड ऑफ एवरीथिंग इन लाइफ. सो देयर, अदरवाइज लाइफ के स्ट्रगल्स क्या रहेंगे. तो लेट इट कम, इट्स फाइन, दैट्स गॉड हैज डिसाइडेड फॉर Yeah. मी. And sometimes I feel, Dhirendra, even the pain is very sweet and nice. हाँ, टू शो यू दैट अगर कुछ है ही नहीं आपके में, तो आपको रास्ता क्या है, मतलब आपको कुछ तो चाहिए. डांस को करने के लिए एक थकाने वाली परफॉर्मेंस तो चाहिए, पेनफुल परफॉर्मेंस तो चाहिए. लाइफ रियाज की भी भी पेन, मैं तो कहती हूँ लाइफ की भी जो पेन्स है, दे enrich your dance also, इन and they एनरिच. enrich your art also. एवरीथिंग कंट्रीब्यूट्स दीदी, आई बिलीव. Yeah. एवरीथिंग. If you don't know sadness, you cannot appreciate happiness. If you don't एब्सोल्युटली. know tears, you cannot appreciate smile. You know, if you स्माइल. don't have a thorn, then you can't, a rose doesn't have a thorn, then सो वेल you सेड can't दीदी. appreciate the rose, the flower. So या, pain is definitely a part of our life and which helps लाइफ. us to grow in life. And I सो think वेल डिस्क्राइब दीदी. so that's what I always say. I always tell my mom sometimes says that forget your past. I said, no, I will not forget my past because it was my learning experience. And I ought to learn that I don't make the same mistakes. I should learn from my past. If I forget, I'll make same Absolutely. mistake again, you know? Absolutely. We make the mistakes because we forget those Yes. mistakes. चलो Yes. ठीक है. Let the pain remain there. Yeah, let the enjoy the pain. I cry, sometimes I cry and I enjoy. I just wash off my pain. Let me हाँ, cry दीदी फिर and I तो हम लोग thank को God. एक दिन ऐसे चलना चाहिए साथ में. बहुत मजा Yes, आएगा आपके साथ. jaldi chalenge, jaldi chalenge. हाँ. Yeah. हाँ. And I always cry and it makes me lighter. And then I thank God. Thank you, God, for giving me this pain. I've learned to live, beyond it. True. So I Why to love hold pain. cry? Why to hold cry? Let it come out. Let it या come out. और वो आप टीयर भी देखोगे ना तो वो भी नमकीन होता है, चख लो कोई नमकीन बात होता नहीं, है. देख लो. नमकीन इज गुड. So So beautiful things are there's coming. so serious talking going on, so let me put you into some rapid fires. Okay, अच्छा. are you ready? पता नहीं, आप Yes. पूछिए. आता हूँ मैं. So your favorite color? You're Favorite not color getting so gray. much All the time. You're shades of not gray. getting so much time. You have to All the say in shades of gray. all the shades of gray. Okay. So, what is the first thing that you do in the morning? Uh, चाय पीता हूँ. And what is that something that you don't like to do in the morning, but you do every day? Uh, दीदी बहुत सारी एक्सरसाइज. सोना पसंद है. I'll tell Aditi Didi. I will tell Aditi Didi. Aditi Didi, watch this अभी show. अभी तो करता हूँ. अभी तो अभी करता हूँ. अभी धीरेन्द्र अपने को बचा रहा है. Aditi Didi, watch this show. What is what is your favorite, tea or coffee? चाय. बिल्कुल चाय, चाय करते. Okay, what do you like to drink? Wine or vodka? आई थिंक अभी, पहले मुझे वोडका पसंद थी, पर मैं अभी रेड वाइन पर्सन हूँ. एब्सोल्युटली रेड वाइन Same. पर्सन नाउ. Red wine, या, red रेड wine. वाइन.
Oh, So what is your favorite word? Bingo. bingo, yes. Bingo, yes. Bingo. What is your favorite cuisine? I'm asking all this question because we are going to go on a date. I will see what he likes. And it's not always necessary that a man has to invite a woman for a date. A woman can invite. So just tell me, what do you like in your favorite cuisine? आई थिंक मैं गोभी बहुत पसंद है। कुछ भी किसी भी चीज में आप गोभी और मटर डाल दीजिए, वो Babu, मैं सब कुछ खाऊंगा। Babu Shona, please. Italian, Chinese, Indian, South Indian, Mexican, प्योर continental. इंडियन, इंडियन, इंडियन। Okay, so I have to एब्सोल्युटली take him to इंडियन। an Indian restaurant. Okay, या good. Okay, what is your favorite destination? If you want to go for a vacation in India, what would you choose? Which place would you choose? आई थिंक थोड़ा पहाड़ों की साइड जहाँ बहुत ज्यादा भीड़ ना हो, मैं मसूरी या शिमला ना हो वो, बाकी बाकी कोई भी, जैसे मैं एक बार लैंसडाउन गया था, मुझे बहुत अच्छा लगा वहां जाकर। Okay. इतने खूबसूरत कॉटेजेस एंड द प्लेस वेरी चीप एंड वेरी नाइस प्लेस टू बी एट, तो मुझे ऐसी जगह बहुत पसंद है। Okay. So, and internationally, what would you like? ये भी मुझे अदिति दीदी ने दिखाया था। मुझे एक जगह है साउथ अफ्रीका में, केप टाउन। Oh, वो मुझे yes. बहुत अच्छी लगी, मुझे बहुत खूबसूरत लगी। वहां मेरा दोबारा जाने का फिर से मन है, कभी तो जाऊंगा। And what do you like, the hills or the beaches? Already you have answered, but I still would say if it's Hills, hills or the hills, beaches, hills, anytime hills. hills, hills. Anytime. What's your favorite outfit? Jeans and t-shirt. Jeans, 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 and my words start with jeans and ends up with jeans. मैं कुर्ते के साथ भी jeans पहनता हूँ, घुंघरू भी jeans पे पहन लेता हूँ। Jeans. Jeans. So, what do you see in a woman first? अकल। Okay. Physicality, no? But that comes much later, much, much, much later. तो बहुत कम मिलेगी. नहीं, वो थोड़ा सा वो मैं मुझे पसंद है, अगर दे आर वेरी वेल नॉट मेंटेन इन द सेंस, आई वुड से रिप्रेजेंट करने में अच्छा होता है ना। तो कई लोग होते हैं ना, वो काफी सारे वर्ड्स हैं, सेपियो सेक्सुअल एंड वो दुनिया भर के सेक्सुअल वर्ड। तो मे बी हाँ. आई वुड गो फॉर वन डेमी सेक्सुअल एंड ऑल सेपियो सेक्सुअल, तो वो दोस वर्ड आई वुड चूज। तो पहली चीज वो देखना पसंद करूंगा कि हाउ दे आर रिप्रेजेंटिंग एंड व्हाट कमिंग आउट ऑफ देयर माउथ्स। Okay, that's nice. And for all the women who want to take Dhirendra for a date, so where would you like to take your date to? अ, मुझे सीपी बहुत पसंद है दिल्ली में। हालाँकि मैंने कम एक्सप्लोर किया है, लेकिन जब भी जाता हूँ मुझे अच्छी लगती है वो जगह। वहाँ ज़रूर लेके जाऊँगा। सीपी में, सीपी की लड़की को सीपी में, दिल्ली की लड़की को दिल्ली में. दिल्ली में। यार दीदी, One बाहर to तो क्या है, बाहर मम्मी-पापा लोग भेजते नहीं है ना आजकल। Acha, wow, clever one. No, I didn't ask anything for myself. I know where I'm going to take him. And you know that place, Radisson, दीदी, Noida, that आई place. नो आई नो दैट Which, प्लेस वेयर आई वुड टेक which, यू। where? कनॉट प्लेस में एक जगह ओडियन, मुझे वो Okay. बहुत पसंद है। थोड़ा-थोड़ा Okay. म्यूज़िक, थोड़ा-थोड़ा डांस, थोड़ा-थोड़ा थोड़ा-थोड़ा Ah, oh, I would दैट्स love अ that. नाइस प्लेस। So that is done. I'm taking you to Radisson Blue Noida, and you're taking me to Odeon. Okay, Odeon, yes. absolutely. We are fixed. So if you want another date with him, please ask him. I can send you his number if you want. So please ping me if you want his number, and you can take him वैसे for मैं a बहुत ही date. कम जगह जानता हूँ, बहुत ही कम रेस्टोरेंट, ये जाता ही नहीं हूँ मैं, थोड़ा लल्लू हूँ यहाँ से। लेकिन जो जानता हूँ वो अच्छे हैं, मतलब मुझे पसंद है जितने भी Right. हैं। So this oops will help you to get, to know more places because there are a lot of people, हाँ, girls आपके out there सारे who would like to गर्लफ्रेंड्स take के you. मैंने प्लेसेस सुने हैं एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर ऑल दोस, एंड आप ही से पता चला है दीदी मुझे सारा। Yeah, yeah. I'm training this guy for all the girls who want to take him for a date. आई नीड दैट ट्रेनिंग, ऑल द दीदीज गर्लफ्रेंड प्लीज हेल्प मी आउट टू नो मोर। That is lovely. That is lovely, Dhirendra. It's so nice to see you and the kind of sincereness that I see you as a person and as a friend, as somebody who's so passionate about his passion and profession, has made his passion a profession. And the way you are with people, that matters to me the most.
हाँ दीदी, That वो तो matters to me. रेस्पेक्ट नहीं करोगे किसी को। जैसे सपोज हम मान लीजिए स्वाति दीदी हैं, आप हैं, गौरी दीदी हैं, एक जिंदगी पूरी इस आर्ट के लिए दी है। मैं ये कह सकता हूँ मैंने ज्यादा रियाज कर लिया, लेकिन इवन इफ यू आर 36 365 days senior than me, then those 365 days experience you have more than me. So that particular respect should come from within for you. For all of my seniors, for all of the people, they are amazing and they helped me a lot. So ये बात नहीं है कि मैं अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। I have to be अच्छा for them because they have always been अच्छे। No, you are acha from within. God has made you that kind. I think your mom goes to your mom, who has given you that kind of sanskar and values that you have indebted in yourself. As we were discussing earlier, that it is so important for the mother to educate the sons, Yeah, properly. हम लोग मम्मी हर बार कहते हैं. मम्मी एंड गुरुजी का आई थिंक मेरी एजुकेशन में, लाइफ एजुकेशन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। दैट्स फॉर श्योर। Okay. She's again asking that question, at what age you chose your passion as your career? He started dancing at 17 and further on he will let you know. Yes, Dhirendra? हाँ दीदी, आई थिंक 17 तो मैं कथक केंद्र में आ गया था, लेकिन करियर के बारे में मैं तब भी श्योर नहीं था। मुझे लगता था सोच के स्कूल चलाएंगे, कहीं मैं बैंक में जॉब कर लूंगा, कहीं छोटी मोटी प्राइवेट बैंक में। इतना ही पढ़ना लिखना मुझे ठीक से आता था। इतना बहुत हाई हाई क्लास स्टूडेंट और बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टूडेंट नहीं था मैं, कि जो आईएएस पीसीएस की सोचता जरूर था, सपने जरूर देखता था, पर ये भी पता था करने का जिंदगी में हो नहीं कुछ। कहीं छोटी मोटी बैंक में, प्राइवेट बैंक में जॉब कर लूंगा या कुछ कर लूंगा। पर कथक केंद्र में आने के बाद भी मैं एक दो साल कंफ्यूज था, आई वुड से। Right. पर एक जगह कहीं ना कहीं क्लिक था कि अब मेरे से कुछ होने का नहीं है, अब नाचना ही है मुझे। तो वो क्लियर हो गया था, वो पैशन यहाँ आ चुका था, एंड दैट समहाउ started entering into the soul and that had become the part of, God gifted calling जिसे कह सकते हैं। I must say that Dhirendra, you started very late. As per Yes. our common system, that you start very early, 4 or 6 or 7 years, you start Hmm. dancing and you get into. You started late, but the heights of success that you've reached and the kind of professionalism you show and the kind of dance, the dedication and the power that you have in your dance is amazing. It shows how much of riyaz and how much of सिर्फ रियाज नहीं, थॉटफुल रियाज. एक Thoughtful, होता yeah. है कि रियाज करना मतलब, Hmm. एक होता है समझ के रियाज करना और जी जी जी। समझदारी से चीजों को, डांस को आगे ले जाना. यू नो सो दैट इज व्हाट आई सी व्हेन आई सी यू. सो हाँ दैट दीदी, इज वैसे कि अमेजिंग. फावड़ा खोद के तो मजदूरी करना तो बहुत बेकार है ना। फिर आप 6-6 घंटे कर रहे हो, 3-3 घंटे कर रहे हो, और तत्कार से शुरू होके वहीं खत्म कर रहे हो, तो व्हाट इज द पॉइंट व्हेन यू आर नॉट जजिंग योरसेल्फ, यू आर नॉट बीइंग अवेयर अबाउट योर मूवमेंट, अबाउट योर वोकैबुलरी, अबाउट योर सिस्टम। तो फिर तो उस रियाज का तो कोई मतलब ही नहीं है, डब्बे में डाल देते हैं। बहुत सारे 6-6 घंटे रियाज करने वाले एक स्टैंड में, एक स्ट्रेच में, बहुत सारे थे। कहाँ है वो लोग पता नहीं। तो ये तो थोड़ा सा चाहिए या रियाज। there's definitely. अब भैया हर किसी के साथ घुल मिल जाते हैं, छोटा हो या बड़ा. निकिता सेठी इस सही. यस, एब्सोल्युटली. मैं ये बात बोलने वाली थी, आपने एकदम मेरी मुंह की बात छीन ली है. क्योंकि जब ये हमारे सीनियर्स की बात करता, हम बुढ़े नहीं हैं, प्लीज ऐसे मत बोलो, सीरियस. नहीं, पर सीनियर मैंने बुड्ढे नहीं कहा। बिल्कुल सीनियर सीरियस. तो ये है बुड्ढा, ये होता है। हाँ, हाँ, exactly. I always say I'm sweet 18 only, not 16, तो 18. रितिका, सारे रितिका यही legalized. आंसर है। ये हाँ, दिमाग से बुढ़ा होता है यार। ह्यूमन बीइंग तो तुम exactly, लोग भी हो, कुछ तो सोचते ही हो। चलो मैं थोड़ा exactly. ज्यादा सोच रहा हूँ या कम सोच रहा हूँ, पर ऐसा थोड़ी नहीं है तुम लोग नहीं। तुम लोग की जनरेशन तो बाप रे, मुझे घबराहट होने लगी है। इतना इतना फॉरवर्ड सोच रहे हो, Yes, सारी दुनिया तुम्हारे सामने खुली हुई है, और कभी कभी तो मुझे सरप्राइज करते रहते हो, और तुम ही लोग सिखा रहे हो। क्योंकि अगर मैं नहीं घुलूंगा मिलूंगा तो मैं आई एम वेरी बैकवर्ड, कि मैं वो पुराने डंडा लेके मैंने हथौड़ी मारी स्टूडेंट के, वो जमाना तो नहीं है ना कि चोटी बांध के रियाज करते थे सर पे। तो वो जमाना हाँ. है भी नहीं है रितिका। तो आई डोंट थिंक आई शुड थिंक इन दैट वे, एंड आई शुड नॉट गेट कनेक्टेड टू यू ऑल। आई लेफ्ट बिहाइंड अदरवाइज। Yes. And I think you are very close to your students also. And that is वेरी वेरी showing, क्लोज, yeah, you're वेरी very क्लोज close. दीदी। You दे become very, टीच they मी become अलॉट। a part of your family. Actually, the students become या your own
a daughter and Oh, son, that is how it oh happens. my. You don't get through a labor pain, नहीं जाना पड़ता है, पर हाँ दीदी, ये दर्द बहुत उतना अच्छी ही बात होता कही. है. So Yeah. that in that way I'm not single. I have a lots of Yes, students agreed. and I I'm became a very mother close when to I was them. 16. I started teaching when I was 16. So I would say I became a mother when I was 16. So I have, without labor, I It's have a lot of, wow, yeah, such a long experience, Didi. yes, very long. 32 years just teaching. And I love teaching. Again. My God. I love teaching, and thanks to my mother, Oh, I would say seriously, 30 over 30 years you've been teaching only. My God. yeah. I started when I was 16 हम because उंगली पकड़ के nobody, चल and रहे थे thanks to मम्मी my पापा mom. की. मम्मी पापा की थी, बिकॉज नोएडा में जब हम आए देयर वाज नो कल्चरल इंस्टीट्यूट इन 1990s. सो माय मदर इज अ विजनरी, शी वांटेड टू कॉल एवरीबody, दे सेड नो, गांव में जाके हम नहीं सिखाएंगे. And so my mother told me, you start teaching. I said, what will I teach? Said, whatever you have learned. So I had completed almost 12 years of training, starting at 4 and 6 at Kathak Kendra. So my mother went and took permission from Guru Munna Shukla ji कि इसको सिखाने Wow. को बोल रहे हैं, अगर आप permission दें. So that's the time I started teaching, managing my Kathak Kendra, my teaching, my education, everything together. And वो इसीलिए तो जुनून कह रहा था. हूँ, आई हैव सो मच टू लर्न फ्रॉम यू. तो वो अभी वो पार्टी से भी ऊपर सोच के चल रहा हूँ अभी तो मैं. Absolutely. So definitely, what you take back from teaching, that comes to, because now you said that you're so much in teaching also. So what you take back from teaching? Didi, a lot. I mean, your students are the imitator what you teach, and if they are doing something wrong, you realize first, okay, why did I teach wrong, or they are imitating me means I am wrong. This is the first thing that comes to your mind. And इसके अलावा जो भी आप सिखाना चाहते हो वो रिफाइंड करके सिखाना चाहते हो क्योंकि दे आर सीइंग यू एज टीचर. सो एज परफॉर्मर इट हेल्प्स मी अलॉट क्योंकि पहले तो परफॉर्मर ही है, स्टूडेंट को सिखा क्या रहे हैं, परफॉर्मेंस के लिए सिखा रहे हैं ना. उसको आगे टीचिंग के लिए तो पहला गोल नहीं रहता है, परफॉर्मेंस के Right. लिए सिखा रहे हैं. You have to remain as performer, you have to figure out what you are teaching first, so you have to work on yourself. That's how they are teaching. And Didi, inki thought process is incredible. These people have a great thinking process, and they are far ahead of their time. तो वो तो दीदी Yes, बहुत सिखाता है मुझे. absolutely. Teaching opens up a new book to you. It's a whole dimension changes, your entire dimension changes as teacher if you work. Yeah, because every student that comes to you comes with a different personality and a IQ level and a performance level. So with Huh? every student, you have to modify yourself. It is a very difficult Absolutely. profession. And everybody is distinct in themselves, very different from each other, and you have to Yes, create. I mean, पांच है, पांच लोग अलग खड़े हैं क्लास में. आपको कुछ ऐसा पांच के लिए सोचना पड़ेगा जो सबके साथ जाए, या फिर आपको exactly. सीखना पड़ेगा वो से कैसे ले रहा है, वो से कैसे ले रहा है, वो से कैसे ले रहा है. It's Yes. great learning from students. Absolutely. It is amazing. Like now Yeah. I can feel like, I've seen you as a performer, but I think you have an exuberance as a teacher also. So Yeah. next that I would like to find in you is, what about choreography? Have you started as a choreographer? अ, दीदी, मैंने एक आपको मैं ये बता दूं, मैंने एक ऐसे कोरियोग्राफर के साथ 8 साल काम किया है कि वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो कोरियोग्राफी नहीं आएगी अंदर से, वो आएगी, वो जर्नी मैंने देखा है. एंड आई स्टार्टेड कोरियोग्राफिंग ऑन. अभी मैंने गांधी द एटर्नल करके कुछ बनाया था जिसका थाईलैंड में प्रीमियर भी किया था. तो वॉज नॉट अबाउट एट ऑल गांधी. इट्स नॉट कि Okay. गांधी जी चल रहे हैं और लाठी लेके दो गांधी बना दिया, पीछे स्लाइड पे गांधी जी चला दिया. इट वाज नॉट अबाउट गांधी जी. दोस ऑल द प्रिंसिपल हाउ ही ट्राइड टू try that, how people started following him, all those things I took. And it's not only about Gandhi. I think a lot, like अभी अहिल्या के बारे में सोचना था. मैं शमा जी के साथ काम कर रहा था, शमा भाटी जी. I'm very much inspired with her.
and she changed a lot in my dance. So तो वो अहिल्या के बारे में सोच रही थी, वो कुछ बना भी रही थी, तभी लॉट्स ऑफ थॉट प्रोवोकिंग थिंग्स स्टार्टेड कमिंग एंड शी कोरियोग्राफ्ड रावण ऑन मी. तो काफी सारी चीजें इन कोरियोग्राफर के साथ काम करते करते आई रियलाइज आई डोंट सी एनीथिंग विद द चश्मा. जैसे अहिल्या के बारे में कि उन्होंने उनका बोलना था एंड दैट इंस्पायर्ड मी टू सी कैरेक्टर विद अ डिफरेंट वे कि इट्स नॉट अबाउट मेकिंग समवन पत्थर का, ठीक है. इट वाज नॉट turning someone into the stone. It is Stone. freezing their desires, Emotion. their Yes. sensitivity, their emotions. It's just freezing that of a lady. Why? सो एक डिफरेंट परसेप्शन देना, तो उस तरह से मैं कोशिश करता हूँ कोरियोग्राफ करने की. और मैं अभी ज़्यादातर दूसरों के ऊपर किया है, पर मैं अभी मेरा अपने खुद के एक्सपीरियंसेस को लेकर मैं सोच रहा हूँ, विचार भी कर रहा हूँ, और होपफुली जल्दी उसके साथ में आऊँगा, तो उम्मीद है. Lovely. It is so nice to find unreveal your other side as a choreographer also. I'm waiting to watch you soon as a choreographer and performer. You know, it would be a treasure to watch you playing both the roles. And obviously I'll be able to see your mind, how your mind works and your education works and how your soul works, which is so beautiful. So I'm waiting to do that. Thanks, Dhirendra, for this lovely session with me, and thank you for accepting the invite. But जाते जाते गाना तो बनता है, पर जाते जाते एक सवाल फिर से आ गया. Do you feel all great performers can be good teachers and vice versa? परफॉर्मर कैन ऑलवेज बी अ गुड टीचर यार. परफॉर्मर्स आर ऑलवेज गुड टीचर बिकॉज Oh, Didi, that's your take. यहाँ one has to be very aware about that Yes. they are performer and the experience what they are going through. They, if they are going to give it, they have to put certain kind of effort. If performer is not a good teacher, means they are not justifying with themselves, or maybe they are not putting hard efforts towards the students, क्योंकि teaching needs effort. वो 45 मिनट एक Yes. घंटे की क्लास में सीमित नहीं हो सकती है. That's something you have to allow them to see your life and you have to peep into their life. इसीलिए परफॉर्मर कई बार गुड टीचर नहीं होते. हम कह तो देते हैं, लेकिन परफॉर्मर कैन ऑलवेज बी ए गुड टीचर बिकॉज दे हैव Yes. एक्सपेरिमेंटेड अ लॉट ऑन देमसेल्व्स. But if the performer, I will agree and disagree with you, Dhirendra. If the performer is able to shift the attention from self, because performers, as performers, we are self-obsessed also. You know, तो वो self से उठा के अगर हम वो कैमरा उठा के अगर हम डाल दे स्टूडेंट्स पे या उस पे, then I think we can be more giving teacher. गिविंग टीचर, एब्सोल्युटली दीदी. हाँ, बिल्कुल सच Yeah. कह रहे हैं. देखिए, मुझे सीखने को मिला. No, no, this is what I wouldn't say that I'm teaching you, but this is what it's my It's just a experience. long experience. What Yeah, giving you the because as information. performers, we love the whole limelight and the shine and the applause. And suddenly, if your student is getting it, you don't like it, you You know. don't like, yeah. Sometimes you don't like it, and that insecurity really kills the teacher in you, kills Very the much. guru This in is you. a very punching point or maybe painful nerve of a teacher. Yes, And that's what they need to work on. yes. You There's no आपको वो ending मैं and no हटाना आना full. चाहिए, वो मैं There's हटाना no आना ending, चाहिए. no full stop. One will Yes, definitely step up to you. You have to be yes, ready. That might be or maybe your student. That insecurity, Didi, I would say, I'm revealing here that not student, maybe with friend or maybe whatever, I have gone through this. I have experienced it, that insecurity. I was insecure. I think I am still working on it. I wouldn't say like 100% I'm out. That insecurity was there. And मैं openly इस बात को बोल रहा हूँ यहाँ पर कि हाँ मैं insecure हूँ या था, कुछ हद तक अभी जिंदा है वो. yes.
Because for me it has been always like what I have not been able to do because of my circumstances, because of the things that I got at that point of time. I try that my students should move ahead of it, you know, जो मैं Hmm. नहीं कर पाई वो मेरा बच्चा कर जाए, ताकि मेरे को कोई रिग्रेट ना रहे कि हाँ ठीक है, शी इज देयर, बट ऑल्सो आई एम वेरी केयरफुल दैट दे डोंट फॉरगेट that they are there because of the guru and the parents. Parents, very Don't true. get into my shoes. I'm giving you a push. I'm giving वैसे you a भी lift. वैसे भी But ना don't. कोई आपके शूज में हो भी नहीं सकता। आप डिफरेंट ही है। आप डिफरेंट ही है। एक्सपीरियंस मैंने कहा ना, अगर 365 दिन सिर्फ तत्कार से आप जज नहीं कर सकते आदमी को, जिंदगी से भी तो जज करोगे यार। 365 दिन भी अगर ऊपर है तो एक्सपीरियंस तो अलग है। Yeah, so as because you're very young, I would always tell you that remember that if you're giving a lift to somebody, always see that they are not getting into your shoes or they are not pulling away your chair. You know, so you have to be aware about that also. आपकी जितनी डायमेंशन तो किसी में मैंने नहीं देखी अभी तक। तो आपके शूज में तो है ना, क्लोज टू इम्पॉसिबल है। No, no, no. That is lovely, lovely, lovely. It's just that we are having a very open discussion, and it's lovely to talk to you, Dhirendra. And so much I take back from you in this show, and it is amazing that I got this chance to experience your journey through थैंक Oops. यू दीदी। पर जाते जाते गाना तो बनता ही है. Okay, a song in which you would summarize this show that you have been on. Bang on Alaknanda says Sangeeta. Okay, thank you. It was a beautiful session. What a lovely session, says Varsha Das Gupta. All women in your show, huh? Dhirendra? Sari औरतें एकदम मतलब Oh, they are going to less watch of later men. also. Yeah, some people, some artists will watch later. Insecurity that we talked about. हाँ अभी अभी हम यहाँ पे नहीं दिखेंगे हाँ, but we will watch the show what Dhirendra said and how Alaknanda pulled up Dhirendra and how was the session. They're not here. I know you cannot uh, you know digest us. You cannot even vomit us. You cannot ignore. You will not love us, you will not hate us, but you can not ignore us. They Okay, so ignore us. True. yeah, we're That's there. what I like, Nanda Didi. That's for Dhirendra also. Nobody can ignore you. Nobody can ignore you. So, but we love you. We love you. We love Didi, you. love We you all too. love you a lot. Sing a song. We'll end the program with this song. अच्छा, मैं सुनाता हूँ थोड़ा सा। Yeah. पले विचों अगदे अंगारे नहीं लुकदे, इश्क दे मुश्क छुपावे नहीं छुप दे, फिर भी ये राज, फिर Ah, भी ये राज जान जाती है दुनिया, होठों पे लगा ले चाहे ताले कोई छुप दे, ah. होठों पे लगा ले चाहे ताले कोई छुप दे, हो बूटा पत्थरां दे उगदा है प्यार का, चिट्ठिए 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 दर्द फिराक वालिए, ले जा संदेड़ा सोने यार दा, ओ ले जा संदेड़ा सोने यार दा। Oh, lovely, Dhirendra. This is so beautiful. So थैंक यू दीदी। beautiful. This is absolutely, and like, the compliments are pouring like rain. बहुत सुंदर भैया, and Varsha Das Gupta said, wow. Varsha नंबर चाहिए मैं अभी देती हूँ तेरे को. वर्षा का तो है मेरे पास, हम दोनों के Oh, पास है. नंबर्स है। But this was lovely, Dhirendra, and lovely talking to you. थैंक यू And दीदी, थैंक यू एंड thank you थैंक्स फॉर दिस so ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी।
providing this kind of opportunity for there I could open myself up openly. Thank you. Thank you. That's what people say that uh, on Oops, they open up and you share your life. And that really means a lot to me because Thank this you. is a show for the artist and for you all who have worked so hard and you all are so passionate about art. So this is what I want people to know about your journey, about your struggle, about your love, about your not so good experiences because artists comes with a whole package, you Yeah. know. So it's not always so fairy and glory and very nice. So that's Yeah. what we want people to know. And you're a lovely. We have to go for a date very soon. Love you, भैया Didi. पहले मैं जा रही हूँ पहले मैं जा रही हूँ So थैंक यू सो मच ये तो बताओ ये क्या लिख रही है वर्षा छुपाना मत ये तो बताओ कि आप मेरे चक्कर में किस किस को बात कर रहे हिडन स्टोरी खोल देगी लड़की सारी। ये पूरी स्टोरी खोल देगी और वर्षा मैंने तुमको बोला अभी कम बोलना है तुमने बहुत गड़बड़ कर रही हो सो अरे जो ये भी बहुत है खतरनाक बोल गई ये बात, मैं चुप कर गया, हाँ मैं मर मैंने पाओगी इसको तुम। बोला ऐसे करने के लिए पर देखो फिर भी बोल रही है but it was lovely thank you so much Jinendra थैंक and यू दीदी, थैंक यू सो lovely मच। knowing you and here comes matlab it's not stopping I can't end the show Dhirendra ji was brilliant would love to have an honor of meeting him someday such a grounded person god bless honor of not meeting him clicking him you are such an amazing photographer and he's such an amazing dancer you have to click दीदी Dhirendra that's प्लीज what शेयर संगीता जी नंबर। Absolutely, right after this show, right after this show. So, thank you everybody who has been थैंक यू। watching the show right now, and everybody who's going to watch after the show so that you're not visible here. But I know that you love Dhirendra and you love the show. And as I said, whether you love us or whether you hate us, you cannot ignore us. So, oops, I said it again. And we shared everything that we wanted to share on the screen, and we'll share something off the screen also. So you're not invited for the date, but yes, definitely we are going for the date. But let's see because the opening of the Valentine's week is happening. So keep thinking who is coming for the Valentine's week. So next Sunday would be the opening for the Valentine week. And let's see who's going to be on the hot seat of Oops, I said it. Thank थैंक यू दीदी। you. थैंक यू। Thank you. Bye. बाय। Bye.